Hello everyone, this is Priyadarshini Singh, your host for today, and for today's session under Yoga Mental Program. And Yoga Mental Program, as you all know, is an initiative for motivating the young minds. And today's session is all about vision, planning, and decision making for great future by Nakul Mehrotra. So we have Mr. Nakul Mehrotra with us, who is an alumni of Saran University and the founder and CEO for Tech-A-Mania, which is emerging education in India. He's also co-founder of Get Your Mentor. Well, it's quite a long list. I insist Mr. Nakul to tell something about himself to our new audience. Please. Sure. Thank you so much, Priyadarshini, for inviting me to this event, and it feels great. बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से young people से मिलने में. So I'll be taking you through. If you want my introduction, I'll just go through it. I've been into many startups. I've seen journeys from failures to big heights. And so आज का discussion हम लोग क्या करेंगे? We'll learn basics which everyone should know, like success. एक बंदे के लिए success की definition क्या हो सकती है? और सक्सेसफुल लोगों के लिए क्या होती है, उसके बीच के डिफरेंस हम लोग समझेंगे और उसको ट्राई करेंगे फॉलो करने का. So this was from my side. Anything else you need from my end? Yeah, Nakul, Is that okay? Yeah. we will like to know something about you. Okay. Yeah. So I'm a very big hobbyist. I've been into research. I've been an entrepreneur. I've been an investor also. By the age of 28, I've invested in small startups. And the reason is why I'm telling all this is I've been here is again, how people make decisions. We'll be learning today the subject of area. So that's all. I'll be showing you my slide mostly. There are more brief details are there. You can note it down and go through it if you feel like. Is that fine with you? Yeah. Perfect. Yeah. Yeah. Yeah, Nakul. You are the So founder. Sorry. Yeah. Go ahead. Yeah. You are the founder of Tech-A-Mania. Correct. So, what basically is Tech-A-Mania, and how are you developing students under your initiative? Correct. So the journey started with again a problem statement which exists in the system. Like many people want to do a lot of studies, पर उन लोगों के पास पैसा नहीं होता कि अपनी पूरी प्रॉपर पढ़ाई कर पाएं या अपनी रिसर्च को आगे लेके जा पाएं. इस चीज को लेके हमारे बेसिकली दो सिक्के के एक पहलू हैं. तो एक सिक्के के दो पहलू हैं ऐसा मान के चलिए. करें तो एक साइड तो ये हो गई जो वर्ल्ड में मिडिल क्लास पीपल हैं जो एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं हायर लेवल पे, और एक साइड ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. तो हम एक सोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज एजुकेशन टीवी चैनल विच शुड बी रीचिंग एवरीवन एट जस्ट 200 रुपीज अ मंथ. सो हमारा एम हम लोग का ये है कि हम एजुकेशन को हर जने तक पहुंचाएं just 200 rupees a month. This is our target for Tech-A-Mania. That's why we are born here, to run this system. This is very appreciable. मतलब मैं इस बात की बहुत सराहना करना चाहूँगी. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि फिर आप मतलब किस तरह से कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से थ्रू लाइव प्रोसीडिंग्स और थ्रू इंटरनेट कनेक्शन. मतलब every section of students is involved, right? Yes. So maybe आप किस तरह से कनेक्ट करते हो स्टूडेंट्स को? How do you make कि it gets penetrated throughout the section of society? So what we do is for around 10 months we work very hard, earn some money, and for 2 months like vacation in December and June we go to villages and teach students there. So as of now we have come up with this only. Now this year we are launching a TV portal where people can come and learn and access our education videos. So this is what we are working on. So you have been live for your initiatives. Yes. So what major villages have you covered? What? Come up again. Ma'am, I just wanted to know कि अभी आप कितने villages cover किए हो? We have not done much till now. Yeah. So we have covered nearly 2 to 3 villages till now. Not much of sessions, but yeah, we have covered a lot of colleges and schools as of now. But villages में भी penetrate करने का हमारा plan है for this year. Yes.
So, and so this is this one another program that is Get Your Mentor. Yeah. इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Yes. So Get Your Mentor is again a new journey which we have started to connect 200 mentors from all over India or even world also, world level also we are trying out. Where a person which has who has any doubt, like somebody wants to become advocate, तो एडवोकेट से हम डायरेक्ट बात करेंगे आपका कि एडवोकेट की लाइफ में चलता क्या है, कौन सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट एंड दे कैन डू बेटर इन देयर लाइफ. Okay. This is a very innovative initiative, I would say. So, Mr. Nakul, I've been through your profile. I have various questions to put to you. मैं ये जानना Yep. चाहूँगी Mm-hmm. कि as I was going through your profile, I've seen you have been through many initiatives and startups. बहुत सारे startups and initiatives आपने एक साथ कर रखे हैं. Correct. आप मैनेज कैसे करते हैं इसे? हाँ, सो मैनेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे. सो मैनेज में हम लोग कहाँ गलती करते हैं कभी कभी, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर्स, वी आर नॉट एबल टू एलोकेट टाइम. सो दिस इज द की ऑफ द सेशन आल्सो टुडे. हम लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए, भले आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले आप एमबीए टॉप कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका मेन एजेंडा ये होना चाहिए, बॉस अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो 100% पढ़ूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट स्टडी. Getting it? So what I do basically is I have allotted time for all my startups and ventures. तो get your mentor की mentoring 9 to 12 होती है नाइट में. Morning SRM I'll go visit 10 to 12 I'll be there in SRM. I'm also right now they've hired me, and then I work with my startup from evening 5 to 8 or even 12 o'clock. It goes like that. तो time का scheduling करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में. This is the key. Time management is the key, students and the viewers. So, Yes. yeah, what I see is you have done your graduation in nanotechnology, Yes, 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 and yes. here you are in education field. So, Education field, yeah, specific true. reasons? So yes, yes. So इसका पूरा जर्नी एक रिलेशन है आपस में. Because again, practical aspects नहीं थे मेरे पास when I joined nanotechnology. Then later I came to know that industry is there, can come in, maybe 5 से 10 साल के अंदर, but अभी industry का growth नहीं है market में. So the best decision I took after talking to myself, a lot of time, कि boss, अभी you focus on something else which you like, and then come into your own industry. You spend some 5-10 years, pick a brand, and let the brand grow to a certain extent, correct? तो ये सारी चीजें एक entrepreneurship की journey के बीच की हैं, but this is how it goes. So I'm still there in the research. I am doing research meanwhile, sideways when I get time, maybe with some of the friends who are in Germany. So we are setting up a nanotechnology laboratory also in certain months. That will be ready, I guess. Hope I'm clear. Oh yeah, yes please. Big way to go ahead. So, I see you quite much of everything. So, so Nakul, I would like to ask, what is your biggest dream? My biggest dream is to see everyone happy and well educated, and to be not compared with each other. There's a lot of problems in the society we'll be talking about. Maybe I'll be taking up slides in another 5 minutes, then I'll be showing you up there. बहुत सारी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर जो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? This just give me a minute, I just need a charger like this. Yeah. सो सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. सो हम लोगों का इशू ये है कि हम लोग पर्सनल लाइफ पे फोकस ज़्यादा करते हैं. वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन लीडरशिप लेवल. तो विल बी लर्निंग ऑल दिस टुडे कि हाउ टू कीप दैट फोकस इन माइंड एंड टू बेटर फॉर द सोसाइटी. Just give me a moment. I'm on it. Yeah. Cool. Can you see me? Yeah. Yeah, So any other question? Yeah, further question? Hope I answered your question. yeah, you answered it very well. So, you were talking about some slides. Yeah. So I'll be going through the slides now. We will see the slides. Yeah. So we'll go with the session around, I'll be switching the slides and cam so that we can have a proper interaction. But I cannot see any doubts coming up, so I would request all the students and viewers to put up their doubts so that we can take it up
meanwhile when we go with the discussion of it. Okay, so I'm just sharing the slides now. So here is my, how I started my journey. I spent a lot of amount of time, learning from my mentors, which are basically, from an online portal about their journey. So उनकी life के बारे में, I took up one by one all the great leaders. So Swami Vivekananda, APG Kalam sir, and Gaurav Gopal Das, he's still there with us. So what I've done is, I've read about them and then learned a lot of things from them. So I could say in one thing, the formal education which I did and the learning I did with them is far, far, better. So this is what we will be sharing today. What I've learned from them. So next slide is about my profiling. So I'm a leadership coach. I give guidance on how leadership skills should be developed in oneself and to take that to the next level. And then I have trained a lot of students. So I am basically focused on personalized mentoring support, where we sit with the students and talk to them about their careers, problems, and give them a personalized solution, which surely help them. Just to give an example, last year we had a CAT student who made it to XLRI Jamshedpur. It's a third top college in India, and he made it there in just 90 days. So this is how this personal mentoring support helps the student to go. And I'm very well sure there are people from there get a package of around 60 to 24 lakh rupees, which is a very value adding one. So for my profile, you can visit here, www.bit.do, resume Nakul. So I guess this is what I have as of now. If you want, I can just, were you able to see my slides? Okay, so I'll just take you again there. Now I'll start my session if you allow me for that. Okay. Yeah, so I'll go with my session now. The first slide says a very, very important question, which is why we are born. So this is one very important point we should understand. And this is maybe you can say it's taken from Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita says in a very beautiful line that we in this human body, after 80 lakh species are gone away. So after 80 lakh species, we are getting a birth. So we should understand the purpose of life. This is a very, very important. Yeah. So what I've done here is I've wrote a keyword here which says add value. So add value का purpose ये है, if there is an all out at home, correct? So all out का company में आपको क्या कर रहा है? Is adding a value which can relieve you from the mosquitoes, correct? So आपको कोई टेंशन नहीं होगा. So ऐसे ही हर एक सिस्टम में जो भी पर्सन है उसका एक वैल्यू एडिंग प्रोसेस होता है, तो आपको वो पहचानना बहुत जरूरी है. जैसे मैं हूँ, सो आई एम एडिंग वैल्यू टू द सिस्टम एज अ मेंटर, एज अ गाइडेंस, एज अ गाइडर और एज अ कोच. तो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, करेक्ट? दिस इज द फर्स्ट रूल आई वांट टू गिव इट टू यू. सो पीपल हु आर वाचिंग इट आउट, आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं. व्हाई वी आर बोर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एड वैल्यू है ना, टू एड वैल्यू का अगर आपको और डिस्क्रिप्शन चाहिए, यू कैन pick me up there so we can have a discussion on that also. But second thing it says is the purpose of education. Purpose of education का मतलब अभी तक define नहीं है लोगों के पास. I've seen many talented people just running after PhDs, postdocs, but not even a high-edge research. But I learned this from please say. Sorry to interrupt you, but your slides are not visible. Not visible, correct? Okay. Is it now? Correct? Can you? No. Yeah, it's visible. Okay, so I was on a slide known as, the statement is purpose of education. What is that? So I learned this from, again, on my coach, on my mentors. Knowing ourselves is very, very important, which we miss these days. So I would recommend all the students listening this session to have at least 10 minutes of self-realization. Self-realization का मतलब ये है कि आप एक एकांत की जगह में जाओ, आइदर लेटो और बैठो, आप अपने बारे में विचार करो कि बॉस मेरा ये बर्थ हुआ क्यों है, मैं कैसी भी फैमिली में आया. आप गरीब हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आप करोड़पति हो सकते हैं, कुछ भी होंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. बट आपको ये समझना है कि आपको जो बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द रोल फॉर दैट बॉडी, करेक्ट? अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हैं अपने आप में, यू आर डन विद योर लाइफ. यू नीड नॉट वरी अबाउट मेरे को क्या करना है और क्या करना चाहिए, करेक्ट?
Okay, then third thing, which is again a very very big core which I have learned in this whole journey, is defining your success is very important. जैसे कुछ लोगों से अगर आप यूपी और दिल्ली की साइड जाएंगे, कुछ लोगों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन होती है यूएसए में जाके काम करना, कुछ लोग की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट जॉब पाना, है ना? तो हम लोग उस चीज को आज क्लैरिफाई करूंगा मैं अपने पॉइंट से. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट वन, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न टिल नाउ एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल. तो सक्सेस का सिंपल सा डेफिनेशन है मेरे नॉलेज के बेसिस पे, इट इज हैप्पीनेस. कोई भी ऐसा काम जो आपको खुशी दे रहा है, दैट इज वन पॉइंट फॉर योर सक्सेस. सेकेंड कैटेगरी इज कि उससे एक रेवेन्यू भी आना चाहिए. रेवेन्यू कम और ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड कर सकता है. इट इज़ नॉट कि इससे मनी मनी आना चाहिए, वो भी गलत है. तो इट शुड कंबाइन बोथ द थिंग्स, हैप्पीनेस एंड मनी. करेक्ट. सो आई टेक यू टू द थर्ड साइड नाउ, व्हिच इज डिसीजन मेकिंग. इफ यू हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, वी कैन टॉक इन बिटवीन सो दैट आई कैन जस्ट टेक मोर स्लाइड्स. प्रियदर्शनी, आपको कुछ पूछना है? यू वांट टू आस्क एनीथिंग बिफोर वी मूव फर्दर? Yeah. Vidashni, any other doubt as of now? Yeah. Can we take it further? Yeah. So prioritize ka I got one question. So I'll just answer that also. So I'll just go back again to the slides, and now I'm jumping into decision making, correct? So how and why a person should make decision and on what priorities, correct? Okay. Yeah, I'm moving now. Yeah, please say. I'm sharing my slides. Just stop. Yeah, so we are done with this success point. Now let's jump into decision making. छोटा सा doubt will take it up. Many people say यार मेरा अभी age नहीं हुआ है, correct? Like my elder brother is there. He says me यार तुम तो अभी बीटेक ग्रेजुएट हो, तुम बच्चों को क्या पढ़ाओगे, करेक्ट? सो आई टेक अ इनवर्स अनदर एग्जांपल ऑन दिस थ्योरी. आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है. आप किसी भी 2 साल के बच्चे के पास जाके बैठो आज के टाइम में, एंड आई गेस दैट किड्स नोस लॉट ऑफ थिंग्स. हमारे घर में कुछ एक किड है स्मॉल, 2 years old नियरली, एंड ही नोस सो मेनी थिंग्स. ही नोस मेरे मम्मा का सामान कौन सा है, he knows मेरे पापा कब जाते हैं, वो कैसे बाय बाय करना है. He knows many other things, and so what, and he's actually capable of teaching a lot of things also if you start learning from him. So मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है before jumping into decision making session is कि बॉस लाइफ में वी कीप लिमिट की यार बॉस, अगर हम 30 के नहीं हुए तो हम नौकरी कैसे करेंगे? ऐसा नहीं. दिस इज ऑल रॉन्ग ऑन आवर पार्ट. सो इफ यू आर केपेबल ऑफ लर्निंग थिंग्स एट अर्ली स्टेज, आप जाके एग्जीक्यूट करना चालू करो. जैसे आई वाज टॉकिंग टू अनदर स्टूडेंट यस्टरडे, फैमिली स्टूडेंट ही है, तो शी वाज टेलिंग भैया अभी तो मैं 6 months हुए मेरे को ज्वाइन करे हुए इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स. अगर अभी आप कोई मेरे लिए प्रोजेक्ट भी लाके देखो तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. सो यू हैव टू क्लियर अप योर नॉलेज. जितना आपने लर्न करा आप उसको अप्लाई करना चालू करो. अभी अगर आप यही सोचते रहोगे कि 2 साल खत्म हो जाए, तो 2 साल कभी खत्म नहीं होगा. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. और अगर आपको अभी से अपनी वैल्यू ऑफ मनी अगर आप बना सकते हो अपना, तो उसे चालू करो काम. करेक्ट. सो आई गेस आई जस्ट टेक यू टू द डिसीजन मेकिंग पार्ट. होप यू आर एबल टू सी माय स्लाइड्स. ओके. Yes. Okay, cool. So I have kept. I would request you all to probably sit down for a while and keep these terms: family, social, personal, world, and country in your priority list. कि आप कौन सा डिसीजन, कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, है ना, जस्ट छोटी सी बात लेते हैं. मे बी आपको आज कॉलेज जाना है, कल आपको कॉलेज जाना है और ठंडक बहुत हो रही है, करेक्ट? तो आप वो डिसीजन अपना कैसे लेते हैं, वो आप एक बार इस ऑर्डर में मेरे को लिख के कीप इट ऑन योर पेपर्स, एंड देन आई विल शो यू हाउ टॉप लीडर्स मेक द डिसीजन, करेक्ट? You can actually pause the video if you are watching it on YouTube channel or something, so you can just check it later. So I'll take you to the slide. What I wanted to share is, so top leaders अगर आप उठा के देखेंगे, top leaders in the sense the people I shared in the early stage, APJ Kalam sir, Swami Vivekananda, Mother Teresa, so these people, how they have made their decisions and how that decision making has changed their life. And I'm not telling that I have followed this pattern, but I have observed this pattern when they have made their decisions, correct? तो अभी आपको मैं उसके कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा उसका.
So how they keep their priorities is the country level, world level, society, family, and then personal. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर आप लोग ना एपीजे सर के बारे में आपने पढ़ा होगा. So always the top priority for him was the country. If I'm okay, just maybe you can say it from the other side so that I can get to understand that. Correct? You can give me a thumbs up call or something. Yeah. So first level they have made a decision. Like I'll tell you practically. So what APJ sir's mentality was, he was country के लिए missile बनाना है because I love missile and I want to give power to the country. Correct? This was his first agenda. Second agenda was he made a treaty. Treaty कहती थी कि treaty में ये लिखा गया था, until and unless there is a war situation, we will not use the missiles. That was the second situation. Third thing, why I'm coming to the society part is, if you have seen his last 5 to 10 years journey, is educated nearly 20 lakh students, more than that. तो उन्होंने society के लिए बहुत कुछ किया. And then coming to his family, I guess hardly he has spent some early age time with the family. I'm not saying you should not spend your time with the families, but अभी मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगा कि आप लोगों का मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो भी लिखा होगा अपना ऑर्डर, वो मोस्टली ये रहा होगा फैमिली, पर्सनल, सोसाइटी. करेक्ट? इसके आसपास कहीं रहा होगा और फिर कंट्री. तो ये एक छोटा सा चेंज है जो लीडर्स करते हैं अपनी लाइफ में. तो लीडर्स क्या करते हैं, कंट्री को हर डिसीजन में प्रायोरिटी रखते हैं. करेक्ट? तो पर्सनल लेवल एंड में आएगा. और फैमिली के लिए मैं अगेन यही कह रहा हूँ, फैमिली को आपको खत्म नहीं करना अपने माइंड से. शुड हैव फैमिली ऑल्सो इन माइंड, बट पहले कंट्री का रोल आना चाहिए. करेक्ट? अगर आपको टॉप लीडर बनना है. और लेट्स सी सम फेमस नेम अबाउट इट. सो आप लोग ये केस स्टडीज लगा के देख सकते हैं. करेक्ट? अब मैं केस स्टडी का आपको रिवर्स ऑर्डर बताता हूँ. करेक्ट? तो आई वाज वाचिंग स्वामी विवेकानंदा's लाइफ स्टोरी. अगर आप स्वामी विवेकानंद का लाइफ स्टोरी देखोगे, वीडियो है 2012 का, आई गेस बना हुआ. 2 hours का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है. यू कैन लर्न लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम दैट. तो उसमें क्या बताया गया है, व्हेन स्वामी विवेकानंद वाज प्रीचिंग हिज नॉलेज टू अदर्स, ही वाज गोइंग टू विलेजेस में जो मंत्री होते थे उनको जाके वो लेक्चर दे रहे थे. एंड द लेक्चर वेंट अराउंड 2 days. And you will not imagine, they have told in the movie clearly, very clearly, that these people have not asked him to even take lunch or any meals. मतलब उनको खाने तक के लिए नहीं पूछा गया था, जो कि अमीर और नेता लोग थे वहाँ के. करे, बट देयर वाज अ कॉबलर, एक कॉबलर थे वहाँ पे, जिन्होंने आके उनको पूछा कि स्वामी जी, मैं आपको 2 दिन से देख रहा हूँ, आपने कुछ खाया नहीं है. एंड देन दैट कॉबलर फीड्स हिम. सो व्हाट इज दैट साइन? दैट इज अ साइन ऑफ लीडरशिप. Before moving further, I'll just say you another input, basically a case study. You can hear me nicely. The case study says, एक बार एक अमेरिका में प्रोफेसर था. He went from class 1st to class 10th, and what he observed, he asked all the people the same question, all students the same question, कि how many of you want to become the leader? Correct? तो first class के बच्चों ने क्या किया? When he went there, all raised the hand, all said कि boss, मेरे को बनना है लीडर, मेरे को बनना है लीडर. करेक्ट? जब वो क्लास 10 तक गए तो वहाँ पे कुछ 5 या 6 हैंड्स थे आउट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 50, विच वाज वेरी बिग. करेक्ट? देन वो साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करी कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में. करेक्ट? फर्स्ट क्लास में जब बच्चा होता है वो कहते हैं सारे मेरे को लीडर बनना है. करेक्ट? 10th क्लास तक आते आते जैसे कि बॉस नहीं बनना है, काफ़ी लोग नहीं बनना है. तो रीजन इज वी आर नॉट लिविंग इनटू अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है बच्चे का जो मन है. तो अगर मोस्ट ऑफ द पीपल को एनालाइज करोगे, आई हैव सेड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. करेक्ट? आई हैव सीन दैट आउट ऑफ अ ह्यूज क्राउड, if you take 100 members, only 10% are following their passion. And that is the biggest problem in the country right now. जो 100 बंदे हैं उसमें से 90 लोग तो पैशन को फॉलो कर ही नहीं रहे. वो ऑलरेडी अपनी लाइफ से दे गेट डिमोटिवेटेड. तो आपको पहली चीज ये समझनी है कि मेरी सक्सेस क्या है, हैप्पीनेस. करेक्ट? हैप्पीनेस मेरी कहाँ से आती है? आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोफेशन. And once I understand that profession, go for a revenue model or maybe a entrepreneurship or a job kind of thing in that. I guess can you hear me now? Yes. Okay. So I'll take you to the next slide. तो अभी एक और बहुत important slide ये बोलती है what kind of vision we should have in future. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी skills को upgrade करने पे they don't invest time. So why I kept that this general doctor and specialized doctor, because if you have a general doctor hardly gets around specialized doctor
Oh, because we have some little connection problems over here. So I guess we have our viewers join with us, and I see certain questions coming up as well. So it's a pretty interactive live session. Viplav Divyashish, yeah, I have your queries, and yes, I'll put it your queries to Mr. Nakul. Then this is some vision mode. Okay, yeah, and please, I would like to suggest you guys keep posting your queries, whatever it is. We have a guest today, and he'll make sure he'll answer all your queries. Just try to clear your doubts. Yeah, so I'm back right now, and I'll take you to another. So I was telling you about that case study, correct? What he found is the major problem which is happening in the system is people are not able to follow their passion. So if we understand how to follow our passion, we can be very, very happy and successful in life. This is the key, correct? This is the key. And another case study is related to this is it's again a very real story, and I would relate this how this leadership qualities is existing in everyone, and how we can fine tune it to make it to become a great professional or great leader. So एक बार क्या हुआ, there was a Sardaji in my class, and he was a very funny guy. One of his principal came one day, he joined our college, and he was telling about his notorious stories. So this principal was telling about his interview session when he was a small kid and he came to an entry to a college. तो उस बच्चे से पूछा गया था कि can you so first they asked first interview. So I'm just telling you an interview story now which happened with this kid. His name is is Singh, Mr. Singh from Kashmir, correct? What happened there is the first question when was asked about his name, and then second one was uh, can you tell me about how cow speaks or a dog speaks or cat speaks? So the three continuous question to him, and he was just sitting like why this person is asking me this kind of question. He was totally silent and maybe probably angry on him. And then what happened later is then they probably asked them can you tell me nose at least how nose look like. And then this guy went on and touched the professor's nose and told him this is the nose. So point is, what I'm trying to convey here is, when a kid is a small kid, he don't know my nose, your nose, correct? When a professor asked him, "Can you show me the nose?" He touched the principal's nose, correct? So the point is, when we grow in life, we learn moral sciences, but we learn certain different things which are not, क्या कहते हैं ना वो बेसिकली एक्सपीरियंस के थ्रू. तो एक बार किसी ने झूठ बोला तो उसको अप्रिशिएट कर दिया किसी ने, तो आदमी क्या करता है वो अपनी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स वही रख लेता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर. शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव लर्न. मैं भी स्कूल में बच्चों के साथ था कुछ दिन पहले. मैंने उनको यही पूछा कि आप में से कितने लोग यू आर अप्लाइंग योर मॉरल साइंसेस व्हाट यू आर लर्निंग इन द सोसाइटी. आपने कितनी बार वो बोलते हैं ना कि ओल्ड एज पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह आपने जाने का रास्ता दिया. कितनी बार हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं, यूजुअली नहीं करते हम लोग. तो दिस इज द प्रॉब्लम विद अस. So how to make a plan for a career for next 5 years? I'll just take up the question. I'll just go with few more slides so that you can learn something more which I've kept there, and then I'll take it up. So what I'm giving a thumbs up on, please take my word on this. All of us are leader, correct? All of us are leaders. We have to fine tune our qualities and core values, and what you say, अपना set of values को बहुत जरूरी आपको set करना है, correct? So I will be taking you now how to set the vision part, correct?
तो अगर आप ना प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोगों में ये कमी है, करेक्ट। अगेन एक स्टोरी से डिस्क्राइब करता हूँ बिफोर गोइंग फर्दर। देयर वर टू पीपल जिनको, एक बंदा था, दो बंदे थे टॉप एमबीए से पढ़े हुए, टॉप एमबीए कॉलेजेस से पढ़े हुए। तो एक बंदा ही हैड अ वेरी गुड क्लियरिटी कि बॉस मेरे को आई हैव टू ट्रेन स्टूडेंट्स, आई लव ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। और दूसरा बंदा अगेन घोड़े की चाल होती है ना, वो भेड़ की चाल। ही वेंट टू एमएनसीज, ही वर्क देयर फॉर सर्टेन 8 to 10 years। और फिर उसके बाद हुआ क्या, ही रियलाइज वन डे कि बॉस मैं जो कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है। एंड ही रियलाइज दिस स्टफ आफ्टर 30 or 35 years old। तो वो 35 के हो गए थे। तो वो रियलाइजेशन वाला पार्ट आई वाज गिविंग यू इन द अर्ली टाइम कि बॉस 10 मिनट आप अपने लिए रखो लाइफ में, डे टाइम में, एंड डू अ सेल्फ एनालिसिस। अब सेल्फ एनालिसिस कैसे होता है बेसिकली, इज हाउ what things I like, if you ask me, I love kids a lot. So if you give me if you get me surrounded by kids, I will be very happy. तो ये चीजें आपको अपने बारे में पकड़ना बहुत जरूरी है। मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या नहीं अच्छा लगता है, दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। सो इट्स अ वेरी बेसिक स्टफ विद अस। इफ यू गो टू केएफसी, यू नो वेरी वेल कि भाई अगर हम केएफसी जाते हैं, हम ढाबा जाते हैं, तो हमें क्या अच्छा लगता है। दिस इज ऑल वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन। वैल्यूज की तरह अपनी डायरी पे बना के जरूर लिखना है। तो आपका एक अपना पर्सनल डायरी होना चाहिए, आपको वहाँ पे रखना चाहिए कि बॉस मेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या नहीं पसंद है। अब मैं आता हूँ स्मार्ट रूल्स कैसे बनाते हैं। स्मार्ट रूल गोल सेटिंग का ये बोलता है कि आप जब भी कोई लाइफ का गोल सेट करोगे, करेक्ट, तो वो गोल्स में 5 चीजें फॉलो होनी चाहिए, विच इज अगेन अ फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट। व्हाट आई हैव रिटन देयर इज, स्मार्ट बोलता है कि भाई हमें बहुत स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो इट शुड बी विद ईयर वाइज स्टफ, कि मेरे को 2020 तक अपना एक घर बनाना है, या मेरे को मम्मी पापा के साथ 2020 तक रहना है, करेक्ट। दिस इज हाउ इट शुड बी। मेजरेबल का मतलब है कि वो इम्पैक्ट का फैक्टर जो है वो मैं कैसे मेजर करूंगा। या मैं कभी ये देखना चाहता हूँ, अच्छा भाई मेरे को अगर घर घर बनाना है अपना, करेक्ट, आज से 4 साल में, तो मैंने उसके लिए कितना पैसा इकट्ठा करा है और कितने पैसे की जरूरत है। तो ये मेजरेबल वाला सिस्टम आपके पास होना चाहिए, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई एम इम्पैक्टिंग, आई एम कीप अकाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आई एम इम्पैक्टिंग एवरी मंथ काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे को एक आइडिया रहता है बाय द एंड ऑफ द ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव इंटरेक्टेड विद, हाउ मेनी हैव हेल्प्ड देम, करेक्ट। तो ये आपको मेजरेबल सिस्टम जरूर होना चाहिए, कोई भी हो। थर्ड थिंग इज, कोई भी गोल आप सेट करो लाइफ में वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आप अपना पुराने टाइम में जाओगे, मे बी अराउंड 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, तो हम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते थे उस टाइम में, वी यूज्ड टू हैव ऑल दिस टाइम टेबल बनाना कि भैया आज इंग्लिश पढ़ेंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं, और कल हिंदी पढ़ेंगे, कल परसों मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पर वहाँ पे गलती क्या होता था, वी डोंट अंडरस्टैंड कि बॉस अगर हमारे लिए इंग्लिश टफ है तो हमें इंग्लिश में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, अगर हमारे लिए हिंदी इजी है तो हमें हिंदी में कम टाइम देना है। दिस इज हाउ इट इज सेज, अचीवेबल वाली बात को माइंड में आपको रखना है। अचीवेबल का मतलब वो है टाइम लिमिट्स। आपको मालूम होना चाहिए अगर मेरे को 4 मंजिल घर बनाना है तो मेरे को इतना टाइम लगेगा, अगर मेरे को 1 मंजिल घर बनाना है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको माइंड सेट में रखनी है, एंड देन यू कैन मेक योर गोल्स, करेक्ट। फोर्थ थिंग आती है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है लाइफ में, करेक्ट। रियलिस्टिक होने का फंडा ये कहता है कि बॉस अगर आप डायरेक्टली सोचो कि आप पे BMW आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। या आप 1 लाख लोगों को जॉब दे दोगे जाके, कभी नहीं होगा ऐसा। आपको छोटे से स्टार्ट करना है और आपको ग्राउंड पे जाके समझना है कि बॉस वो मेरे लिए कैसा काम करता है। जब मैं अपने एफर्ट्स 100% दे रहा हूँ तो मेरा आउटकम क्या आ रहा है। तो ये रियलिस्टिक का मतलब है, आपको गोल्स जो भी रखने हैं वो रियलिस्टिक रखने हैं। टाइमली का मतलब है कब अचीव होंगे, कितने टाइम में अचीव होंगे, इसका आपको माइंडसेट होना चाहिए। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ कि आपको अपने गोल्स अब सेट कैसे करने, करें। तो बेसिकली गोल्स बनाने कैसे हैं। और उससे पहले एक बहुत बढ़िया इनपुट जो रह गया स्टार्टिंग में, वो ये था कि गोल्स क्यों होने चाहिए लाइफ में, करेक्ट। तो गोल्स क्यों होने चाहिए, इसका 2-3 चीजों से मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। अगर आप किसी को भी पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, करेक्ट, तो पोस्ट कार्ड में आप क्या करते हैं, एंड यूजर का एड्रेस जरूर डालते हैं। अगर वो एड्रेस नहीं होगा तो वहां पे डिलीवर नहीं होगा पोस्ट, करेक्ट, परफेक्ट है पॉइंट। तो सेम लाइफ ऐसा चलता है, अगर आपकी अपनी लाइफ को अपना फाइनल डेस्टिनेशन आप सेट नहीं करोगे तो आप वहां तक अचीव करने में बहुत दिक्कत होगा, आप नहीं पहुंच पाओगे, करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट इज द फर्स्ट गोल। सेकंड गोल शिप का है। तो शिप भी यही कहती है कि अगर आप पे रडार है, अगर आप बहुत सारे डायरेक्शंस देख रहे हो, करेक्ट, मैं एमबीए भी कर लूँ, मैं आईएएस ऑफिसर भी बन जाऊँ, मैं बीएससी भी कर लूँ, तो ऐसा ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। यू शुड टेक वन डायरेक्शन एंड अ प्लान डायरेक्शन कि बॉस मेरे को अगर इस डायरेक्शन में जाना है या मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे को इस डायरेक्शन में जाके ये अचीव करना है। दिस शुड बी माय माइलस्टोन्स, करेक्ट। तो ये 2 केस स्टडीज हैं। थर्ड केस स्टडी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, इट्स फ्रॉम अ बहुत कॉमन लाइफस्टाइल से। इमेजिन यू आर ड्राइविंग अ कार और बाहर बारिश हो रही है,
आपकी कार में सब कुछ चल रहा है, अच्छा लाइट भी चल रही है अच्छी, रेडियो भी चल रहा है, आप एफएम सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। बट अगर आपका आपका विंडो का वो शीट का पाइप नहीं चल रहा है शीट का गार्ड जो होता है आपका पानी वाइप करने वाला, दैट इज नॉट मूविंग प्रॉपर्ली, यू कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रंट ऑफ योर व्हाइल यू आर ड्राइविंग, करेक्ट। तो आपको जब सामने का दिखेगा नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे बॉस मेरे आगे कार चल रही है, मेरे आगे ट्रक चल रहा है। तो दिस इज व्हाई द विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दूर का दिखना चाहिए, करेक्ट। एक चौथा एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे गोल सेट करने हैं 10 ईयर्स वाले, एंड देन विल टेक अप डाउट्स इन द लेटर रन। तो अब आप एक और बहुत अच्छी एग्जांपल्स यहाँ पे देखो कि अच्छा बाद में आता हूँ मैं आपके, एक सेकंड जस्ट आई जस्ट टेक यू टू द हाउ टू राइट गोल्स। सो प्रॉब्ली व्हाट यू कैन डू इज टेक अप अ डायरी एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाट ऑल इज रनिंग इन योर माइंड। जैसे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव केप्ट हियर is what I have written is I want to live with my family. That's one stuff I want to work on. I want to have a technical company. I want to do research in my own area. I want to adopt a village, and I want to make 1 lakh job available for people around me, correct, to help them. I want to start education TV channel. ये मैंने क्या करा, मैंने अपना सेल्फ रियलाइजेशन करा, अपने माइंडसेट को देखा कि बॉस किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है, what would be my situation when I die, ऐसा कुछ एक एस्टिमेशन लेके you should understand that part. फिर what all I want to do. So अब आप इसमें एक चीज देखना बहुत अच्छी है, अगर आप देखोगे it has family goals, it has personal goals, it has professional goals. ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लोग गलती ही करते हैं लोग क्या करते हैं, they set their goal कि बॉस BMW खरीदनी है, जबकि BMW is not your success. Again, if you go to the success chapter in the early stage, BMW is not the success. सक्सेस है आपकी हैप्पीनेस क्या है और आपके पास रेवेन्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो उससे वैल्यू एड हो रही है और रेवेन्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट इज सक्सेस, करेक्ट। So I've kept all the kind of goals which are into diverse field. Now what I've done is I've sat down and understand it from a practical perspective कि कौन सी चीज कब करी जा सकती है, किस प्रायोरिटी में करी जा सकती है, करेक्ट। So if you see, I've kept the years here. So I was ready with a team. I've already started interacting with a lot of students. I thought the education TV channel is the right time, which I decided way back in 2016, and I'm going to start in 2018 now. Okay, so 2019 I've kept Adopt a Village, where I'm generating huge revenues. जहाँ पे revenues आने लगेंगे, then I can go and fund the villages so that they can develop. And then I kept funds for cancer treatment. So when the fund is coming, so again अब आप ये बात समझ रहे हो, what I kept here is funds for cancer, correct? तो अभी पता है ये थीम कैसे आया मेरे माइंड में? No, I was on Facebook one day. एक दिन एक स्टूडेंट है मेरे, उनकी मदर एक्सपायर हुए थे ड्यू टू कैंसर, एंड I got shocked seeing that post when she had updated that she has lost her mother. वो पोस्ट मेरे को इतना ज्यादा पिंच कर गया, और ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी होता है, और आप एनालाइज करोगे ऐसा आपकी लाइफ में होता है, एंड you have to understand that situation. And what I took is I took a snapshot of that photo and kept with myself, and I was in a big pain. I couldn't sleep all night because of that one thing, which मेरे को ये लगा कि जब उनकी मदर का डेथ हुआ, करे, how much pain he might have, he might or she might have, and same pain I might get, if my mother goes through that. तो मेरे को लगा ये एक ऐसी चीज है दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन, उसको हमें फोकस करना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो ऐसे में आपको, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल which is again a part of leadership. I'll show you again maybe within the slides. So आपको ये follow करना बहुत जरूरी है। And now I'll take what I'll kept is one by one I kept all the things in an ordered form. Because मेरे को अपने टेक्निकल कंपनी बनाना है, तो कब तक मेरे को टेक्निकल कंपनी बनाना है, करेक्ट। So this is all, you can see this slide maybe made within a minute's time, but it has took at least 3 to 4 months or 5 months or 6 months of analysis, and then I came up with this idea, correct. So I would recommend all of you, सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रॉपर टाइम लें and make this thing ready on your diaries. आप लोग अपना पर्सनल डायरी जरूर रखें, है ना। So I've just kept this is my end slide, I guess. I can take up questions now, and if you have any further doubts, I would be happy to go with that doubts so that we can learn more. So hope we are going right with the time, correct? Can you see me now? Correct? Okay. So shall I take up the questions now? Yeah, Nakul, definitely. Yeah, cool. So I have a question here. Yeah, please go ahead. Question. So, let's see. Okay. First question comes from Viplav Digashish.
Yeah. So it just says that, okay, it's nice to hear from you, Nakul. And we just wanted to ask you what to do if you are talented for more than one field and are Uh-huh. passionate about a field. So this question is Okay. basically how to prioritize which one to take up first. Perfect. तो prioritizing में क्या रहेगा? Like I have done, if you have, you ask me that thing, why I'm into education industry now and analytics is a different field, correct? So अभी क्या करना है आपको? Market का भी analysis करना है. You have to understand कि market में भी क्या चल रहा है, correct? That's very very important. अगर मैं सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ता हूँ, correct? If I'm from that field and the market में उसका डिमांड नहीं है and I'm working very very hard, obviously the results will not come. यहाँ पे आइडिया ये होना चाहिए आई शुड पुट माई 100% इन द राइट डायरेक्शंस. राइट डायरेक्शन का मतलब ये है when I analyze the education industry, I could see there are a lot of students doing suicide because they don't get the right directions. So I thought this is my field. As of now, I should concentrate on this and start helping others. Hope I'm clear with this. You want any further inputs? Just let me know. Yeah, Viplav, I You getting my point? Correct. तो market की demand समझना बहुत जरूरी है. so, Yeah. so Viplav, we guess this query is answered. In case you think that you need to ask certain other things, just post and we'll get back to your question. Next question Correct. we have is huh, says कि see, parents get influenced by others' success and want us to pursue the Correct. same. So how do you Correct. convince them that every individual has their own choice and interest? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. करेक्ट. ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है. व्हेन आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, घर में सब जने बहुत परेशान थे. करेक्ट. एवरीवन इज की बंदे को क्या हो गया, अच्छा खासा नैनोटेक पढ़ा. he was even I was getting a job, I didn't took up any calls and all. बिकॉज आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना. तो इस केस में आप क्या करो, इफ यू रियली ट्रस्ट योर पेरेंट्स, go and sit with them. And I've done that. I'm telling you frankly, I've done that. I sat with my dad and mom and brother together. I talked to them very clearly कि बॉस मेरे साथ ये चल रहा है, बाहर में ये चल रहा है, मेरे को ये पसंद है और सिस्टम में ये डिमांडिंग है भी. तो दिस इज माय राइट करियर. अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा. आई नो इट वेरी वेल. आई कैन अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कि उनका बात बिल्कुल जेन्युइन है. पेरेंट्स हाथों के पीछे पड़ जाते हैं, बेटा शर्मा जी का बच्चा ये कर रहा है तुम भी कर लो. बट देन आप अगर उनको कन्विंस कर सकते हो क्योंकि आप भी उनके बेटे हो डायरेक्ट करेक्ट. आई एम टेलिंग यू वेरी इन अ वेरी फ्रैंक वे, व्हाट पेरेंट्स वांट इज अ हैप्पी किड. उन्हें भी चाहिए मेरा बच्चा खुश रहे और सुखी से रहे, करे सुख रहे. तो उसका फंडा यही है, आपको उनको जाके बैठ के उनके पास में कन्विंस करना पड़ेगा कि मम्मा अगर मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग पसंद है, प्लीज मेरे को करियर लेने दो. क्या हो जाएगा, मैं अच्छा इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन पाऊँ या इंजीनियर ना बन पाऊँ, एटलीस्ट मैं इंटीरियर डिजाइनर तो बनूंगा. तो आपको जाके उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है. तो आपके अपने पेरेंट्स से करें, और आपने किया कन्विंस, उन्हें पहले भी किया करें. जब बचपन में आपने साइकिल मंगाई उनसे तो आपने कन्विंस किया कि मामा पापा पैर में दर्द हो जाता है और टाइम बहुत खराब होता है, मेरे को साइकिल या स्कूटर ला के दे दो. आपकी कन्विंसिंग पावर है, आप जाके उनके साथ बैठो एंड इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आपको लगता है, आपको बिलीव है कि आप 100% कर सकते हो, देन गो फॉर इट. क्या आई एम ओके विद दैट. Yeah, Nakul. So next question we have from Aman, and Aman asks that या would be a very last question. That how to be an ओके. entrepreneur. करेक्ट. सो वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन. अगर आप कोई भी इसको सुन रहे हो, प्लीज टेक केयर ऑफ इट. एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑन अ वेरी बेसिक फाउंडेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, इफ यू टेक अप एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू आर एक्चुअली डूइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप. इट माइट बी अ सोशल लेवल और अ नॉर्मल लेवल. अब मैं आपको इस चीज से कोट करूंगा. सो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है. बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि उन्होंने देखा कि अगेन किसी का कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आप उसमें डायरेक्टली जंप मत करो. आप पहले प्रॉब्लम को समझो कि मार्केट में डिमांड कितनी है. डू पीपल रियली लाइक माई आइडिया और माई इनोवेशन. अगर आप उसको दे पाते हो तभी आप मार्केट पे आओ. This I'm telling you frankly, correct? I am just telling an example from a student's perspective so that आपको relate हो पाए, correct? I'm into mentoring now, and why I jumped into mentoring because I knew the problem very very clearly. कि boss, बच्चा आजकल 6th स्टैंडर्ड में आता है और IIT JEE की कोचिंग सेंटर्स बच्चे को अप्रोच करते हैं कि आप मेरा ज्वाइन करो, करेक्ट? एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग द किड फ्रस्ट्रेटेड.
the kids has to change, go through a lot of directions, कि मैं अभी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, करेक्ट? तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रहा है एंड हाउ यू कैन डिलीवर दैट प्रॉब्लम. जैसे इफ यू टेक अप एग्जांपल ऑफ ग्रेट एंटरप्रेन्योर इज Mohammed Yusuf, correct? Mohammed Yusuf is a founder of Grameen Bank. He has worked on the same issue. He says because he has 50 plus companies. The reason he is running 50 plus companies on the same foundation. He says मैं कहीं भी जाता हूँ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता हूँ, उसका एक सोल्यूशन बनाता हूँ. Just for example's sake, what he has done is he went to a village in Bangladesh. He saw that there was a lot of malnutrition happening. मतलब लोगों को proper nutrition नहीं मिल पा रहे थे, and they were all village people. What he had done, he went back to his team. उन्होंने अपनी टीम के साथ बात किया कि ऐसा प्रॉब्लम है सिस्टम में, क्या आप लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हो इसको. एंड उन्होंने क्या करा, एक 5 रुपीज का कैप्सूल बनाया विच पीपल कैन इनटेक विद दैट 5 रुपी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैप्सूल. उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. अब वो क्या कर सकते हैं, सेम बिजनेस मॉडल दे कैन पुट इट इन द अदर वे. वो कॉर्पोरेट से जाके कह सकते हैं कि आप 1000 कैप्सूल स्पॉन्सर करो एंड नाउ देयर इज अ वैल्यू जनरेशन, मनी जनरेशन, करेक्ट? तो आपको सिस्टम ये समझना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम कौन सी आप सॉल्व कर रहे हो. So in short, entrepreneurship is all about solving a problem. Correct? So shall we go for the next question? If you're not clear with any doubts, please do update me. Yeah. So please keep updating your doubts if you have any. So next question is, we have this next question from Ravi. Ravi asks, how to make a plan for my career for next 5 years? Perfect. So as I shared in the slides, आपको बहुत जरूरी है कि अपनी पहले तो प्रायोरिटी सेट करना. अच्छा, बिफोर इफ यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड अनदर थिंग इज देयर आर 4 व्हील्स ऑफ लाइफ. अगर आप लिख सकते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर. देयर आर 4 व्हील्स ऑफ लाइफ व्हिच सेज, वन इज पर्सनल लाइफ और पर्सनल गोल्स आप ले सकते हैं, वन इज प्रोफेशनल गोल्स, है ना, वन इज फैमिली गोल्स एंड वन इज सोसाइटल गोल्स. ये चारों गोल्स हर बंदे की लाइफ में होते हैं और इसका होना बहुत जरूरी है. चारों का मेंटेन होना बहुत जरूरी है. दे आर लाइक अ व्हील ऑफ लाइफ, करेक्ट? तो आप क्या करो, इन गोल्स को पहले माइंड में लिखो एंड देन स्टार्ट राइटिंग ऑल द गोल्स ऑन अ डायरी. तो आप जब गोल्स अपनी लाइफ के लिखना चालू करोगे कि बॉस व्हाट आई वांट टू डू दिस ईयर, व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट ईयर, व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट ईयर, जब उसको लिखना चालू करोगे और आप उसके लिए अगेन दैट स्मार्ट वाला रूल फॉलो करोगे जिसमें आपको बहुत रियलिस्टिक होना है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी होना है, उसको टाइम का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. तो इस वे में आप उसको सेट करो, है ना? सो होप आई एम ओके विद दैट. यू गाइस आर गेटिंग द आइडिया 5 years वाला, या आई नीड टू गो अनदर राउंड ऑन दैट? या प्लीज सजेस्ट. So Abhiyo want you to suggest certain books to be read to learn about the leadership and decision making. करेक्ट. तो मेरे जैसा बंदा बुक्स बहुत कम पढ़ता है एक्चुअली. तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स राइट नाउ. What I could recommend right now is there are 2 good books, very good books which you can start reading. One on leadership, one on life skills. So one is Rich Dad Poor Dad, जो आपको पूरा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताएगा, कैसे हम लोगों को फाइनेंस और मनी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना और समझना चाहिए. That is Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Then second book is again a very great leader whom I've learned all these things is probably I would mention him. The person's name is Simon Sinek. So Simon Sinek is a founder of another startup. He says a very basic principle of how to start with why. तो आपके माइंड में हर चीज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, why, how and why, how and where I should do and how I should do. So ये 3-4 basic questions हैं. So this person name, the book author name is How to Start with Why. The author name is Simon Sinek. He's a great motivation speaker and a leadership coach. वो भी यही insights देते हैं कि आपको अपनी leadership qualities को कैसे develop करना है. Okay, so these 2 books as of now I can recommend. If you want, I can just put up in the comments later about the list of the other books. Right? Yeah. Well, moving on to next question. Okay, B.Tech in better way, correct? Yeah. How to do Sure. B.Tech in better way. Okay. Sure dear. So Nitish, what I would recommend here is आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको ये समझना है बीटेक का वो also कि कैसे आपको 4 years अपने आप के डिवाइड करने हैं. तो फर्स्ट ईयर यू डू जनरलाइज स्टडीज, सेकंड ईयर यू डू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे कोर्स में मेरे को क्या पसंद है, देन आई शुड गो इनटू दैट स्पेशलाइजेशन.
and make more knowledge and efforts in that area. तो ये बहुत जरूरी फर्स्ट प्रिंसिपल है. सेकंड प्रिंसिपल है कि यू शुड सी राइट कंटेंट. राइट कंटेंट का मतलब ये है कि बॉस आप क्या करते हो अभी आजकल जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे वॉच ऑल द टीवी सीरीज. तो इंटरनेट के एक्सेस मिल जाता है तो टीवी सीरीज देखते हैं. आप टीवी सीरीज छोड़ के आप इतने अच्छे अच्छे देयर आर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड यू कैन गो टू कोर्सरा, EDX, IMBX, ये सारे बहुत टॉप लेवल कॉलेजेस हैं विच प्रोवाइड फ्री लेक्चर्स. हम उनके जाके MIT का नाम अगर आपने सुना हो, MIT मैसाचुसेट्स USA, they are a top world college and they provide free lectures on all topics. तो आप उसमें जाके वो लेक्चर्स पढ़ो. Even I have read that. जब मेरा बीटेक खत्म हुआ, when I realized कि this is the right direction, I got an internet connection and start reading all this stuff. तो आप क्या कर सकते हो? If you're okay with the principle now, spend time judiciously. मैं नहीं कहता पार्टी करना जरूरी नहीं है. If you are in BTech, पार्टी करना भी जरूरी है. There should be a time set for parties, तो अगर फ्राइडे इवनिंग आपको पार्टी करना है तो आपको मेक श्योर यू वर्क वेरी हार्ड फॉर नेक्स्ट 6 days. तो संडे अगर आपको रेस्ट करना है संडे रेस्ट करो, बट डू सी द राइट कंटेंट एंड बी सराउंडेड बाय राइट सेट ऑफ पीपल आल्सो. अगर आपको कोई फ्रेंड ऐसा है दे आर नॉट कोऑपरेटिंग इन योर एजुकेशन और व्हाटएवर, यू हैव टू अवॉइड देम समटाइम्स. करेक्ट. तो आपको ये प्रायोरिटी बहुत जरूरी है सेट करना. होप आई एम ओके विद दैट. यू आर गेटिंग द आंसर. इफ यू आर नॉट, जस्ट प्लीज लेट मी नो. So next question comes from Priya, and Priya wants to know how to overcome stress. Okay. So yeah, there might be certain different level of stresses. कि ऐसा भी हो सकता है आपको कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो उसके वजह से कोई स्ट्रेस हो, या स्टडीज की वजह से स्ट्रेस हो. तो इस चीज में आपको बेस्ट रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन और योगा. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कुड बी आप अगर बुक रीड करना आपको अच्छा लगता हो तो बुक्स रीड करो. स्पेंड सम टाइम विद द बुक्स. सबके लिए अलग है. इट वर्क्स विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जैसे मेरे लिए आई लव लॉट ऑफ पेट्स. करेक्ट. सो व्हाट आई डू इज बेसिकली जब आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड आल्सो बट बिट स्ट्रेस, व्हाट आई डिड इज आई गॉट सम पेट्स. तो एक पेट आप अपने घर पे ला सकते हो. यू कैन हैव सम स्पेंड सम गुड टाइम विद देम, लर्न फ्रॉम देम हाउ दे डू क्रेजी स्टफ. तो आपको ये समझ में आना चाहिए योगा इज मस्ट. योगा एंड मेडिटेशन इज मस्ट. एंड देन सेकेंडली यू कैन वर्क ऑन अ डिफरेंट वे. अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, यू स्पेंड सम टाइम फॉर द म्यूजिक. Shall we go with the next question? Yeah. Gautam Nakul has a query: how to take decision for your passion when you're not in the same field? How to take a decision for a passion when you are not in the same field? What I could probably take a question in this way. I would help you in defining how to judge your passion. Correct? तो passion के ऊपर I'll talk about. Probably you get an answer from that. तो passion का purpose ये है when I start working without considering the time limit. Like people used to ask me, one day we were talking about to a friend. It was around 2 o'clock in the night, correct? And I was still working on some project. So that defines your passion, correct? When you're working so hard that you're not even worried about anything happening around you. That's what, that could be one key factor to understand that actually you are following your passion there. Hope you are getting that question. Answer to that question. When I am not in the same field, correct? Same field वाली बात तो भी नहीं जज पा रही. But then what I can say here is, this is how you have to judge. When you are into that stuff, आपको कुछ दिख नहीं रहा है. If you are into nanotechnology or you are into entrepreneurship, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि entrepreneurship ही चल रही है मेरी लाइफ में, correct? I have to do that to give 100%. So that's how you can understand that you are in the right direction. Yeah. So Diksha wants to know that most of the students are thinking to start a startup. Correct. So do you think they have a lot of opportunities? Obviously, as of now, startup are bit into a अभी क्या है थोड़ा struggling period है because government भी funds दे रहा है but अभी properly funds market में नहीं आ पा रहे हैं, correct? But what even I encourage students is, अगर आपको मैं थोड़ा study बताऊंगा, if you have saved some money, you should start investing that money to other generation. तो मेरा कहने का indirectly मतलब है startup में struggle बहुत ज़्यादा है, but there is nothing like you cannot do it. If you have a brilliant idea, if you are able to solve a problem for millions of people, you should actually do it. And there are people. एक example उन बंदों के point of view से बता देता हूँ जिनको basically लगता हो कि मेरे को funds की ज़रूरत है, funds कैसे मिलेंगे, correct? So I had a personal experience. I was running a startup into food venture where we prepared homemade food and delivered to college students. Because SRM में huge crowd रहता है, we used to deliver that food to SRM students.
So what I learned there is, one person was following us on Facebook. He was seeing our work, and he called us one day for even giving the funds. तो पॉइंट इज आपको स्टार्टअप में वेंचर कैपिटलिस्ट के पीछे भागना नहीं है कि भैया सर मेरे को फंड्स दे दो. जो परफॉर्मिंग वेल एंड दैट वेलनेस इज कमिंग इन द मार्केट, करेक्ट, दे विल कम बैक टू यू. सो मेरे कहने का मतलब ये है, स्टेप बाय स्टेप आप अपना हार्डवर्क करो. यू पुट योर 100%. डोंट वरी अबाउट द आउटकम्स. It will surely work. In India, it will surely work right now. अच्छा, just one statistic with this question I want to give to everyone sitting here. आपको स्टार्टअप का बस अभी इसलिए सुनाई दे रहा है, एंड स्टार्टअप इज द वेरी वेरी गुड थिंग राइट नाउ. अगर आप कंट्री का पॉपुलेशन एनालिसिस करोगे, बाय 2025 कंट्रीज पॉपुलेशन विल बी 200 करोड़, करेक्ट. दिस इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेशन, करेक्ट. सो 2000 करोड़ में 65% पॉपुलेशन विल बी यूथ. 65% का पॉपुलेशन का मतलब हो गया 130 करोड़ पीपल विल बी इन द यूथ एज. तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए दिस इज द वेरी गुड सोल्यूशन टू हैव मोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. So imagine somebody, everyone in the different places start doing startups, and we have nearly 1 crore startups all over India. And these startups, 1 crore startups, are able to employ 10 or 100 people on average, on a range basis. We can do a lot of employment with that. So this is why startup is a very very good solution in the coming future. Hope I'm okay with that. Yeah, there's this question from Yeah. we have okay. Sumi and I think she is Nakul. And she says that my son is Yeah. addicted of social media, and is it Correct. possible to make a better future in social media field? Because he doesn't know anything, he knows only social media. Okay. She just So wants to know some future perspectives in social media field as well. करेक्ट. सो हाउ इज आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा है, और ये मिस्टेक मैंने भी करी है अपने स्टार्टिंग में. बट आई कैन रिकमेंड राइट नाउ इज आप उनके साथ बैठिए, या आपने कोई सीनियर मेंबर आपके घर में हो जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, आप उनसे मिलिए एक बार और उनसे उनको डायरेक्शंस दिलवाइए. जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माय फेसबुक, जब मैं यूज़ करता था, सो फेसबुक जब मैं यूज़ करता था, आई यूज्ड टू सर्च ऑल द पिजन्स. जो भी लोग जिनके पास पिजन्स होते हैं या डॉग्स होते हैं, उनको मैं कनेक्ट करता था. एंड आई यूज्ड टू हैव 5000 पीपल. फिर मेरे को जब नॉलेज आया, जब माइंडसेट बना कि बॉस, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करनी, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ पीपल इन योर नेटवर्क. Then I started removing all of them and started connecting with people who are like-minded, like education sector में जो काम कर रहे हैं, जैसे उमेश सर हो गए, who has invited me for the session. I have started connecting all the top leaders in my sector, in my area of work. तो आप अपने बच्चे को ये गाइडेंस दे सकते हो कि बेटा, अगर तुम्हें जैसे I have been recommending another student of mine. She wants to become an interior designer, right? So I have asked us to follow all the pages and the groups in Facebook about interior designing, and she is doing pretty well right now. तो अगर आप बच्चों को राइट डायरेक्शन दे देंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा. Okay. Yeah. Yeah. Sujata says that we always think to make a big change in short time. Correct. How to achieve it faster? I guess big change in short time is the wrong theory. We should not go into that way. Maybe you should give more legitimate time. जो मैं आपको रियलिस्टिक वाली बात बता रहा था, अगर आप कोई भी बिग चेंज करना है, इवन लॉट ऑफ केस स्टडीज आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, करेक्ट. बहुत सारे लोग हैं हमारे लोकेलिटी में, वी डोंट पे, who don't pay electricity bill. और जब आप उनको क्वेश्चन करते हो कि बॉस, यू हैव लर्न इन मॉरल साइंस दैट यू शुड नॉट चोरी मत करो, और यू शुड पे द बिल्स ऑन टाइम, एंड देन दे क्वेश्चन कि भाई सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, करेक्ट. So there are a lot of case studies to work on. So what I could recommend in this is, let me just go to the question. So big changes short time वाला कहाँ? Why I was giving this theory is, it will not come just like that, correct? अगर आप सबको जाके पुश कर दोगे बॉस मीटर चलाना है, आप गलत कर रहे हो, नहीं मानेगा वो, करेक्ट. You have to make them realize कि बॉस क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, and that realization will take time for sure. Realization एक साथ नहीं आएगा, है ना. तो what I can recommend is, I guess you should legitimate more time for the if you want to make a bigger impact. और आप क्या कर सकते हो, you should start investing more time on that same idea. अगर आपको मानो you are going to do some entrepreneurship or something, correct. तो आप उसमें अगर आप 5 घंटे स्पेंड करते हैं, तो आप क्वालिटेटिव टाइम 5 घंटे अगर आपका है, आप उसको इंक्रीज करके 10 आवर्स करो, and that time should be dedicated 10 hours. So this is another way where you can start making more impact. Or another way is start adding more people who are like-minded. Correct? Hope I'm okay getting your answer. Yeah, sure.
Okay, how can you do That the same thing? how can you do same thing again and again? That how to kill the monotonicity? Okay, so probably what I understand from this question is, in the case of employment maybe, where you are an employee and you're trying to do the same job in 9 to 5 schedule. So maybe आप क्या कर सकते हैं, you can add some activities to your life, maybe sports or music, or take up extra challenges. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यही मैं लीडरशिप के बारे में एक्चुअली मोर डिस्कस करना चाह रहा था. Maybe we can have some other session also later. So पॉइंट ये था कि we don't take extra responsibility. मैं आपको एक रोल मॉडल एक बंदा बताता हूँ जो आई हैव बीन फॉलोइंग अ लॉट. सो हु गोस फॉर अ जॉब एंड डोंट इवन बॉदर अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द वर्क इज डन. सो पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम अपनी है, प्रॉब्लम सामने वाले की नहीं है. तो इफ आई एम डूइंग सेम वर्क अगेन अगेन, तो इसका मतलब ये हो गया आई एम नॉट टेकिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इफ यू कैन सी लॉट एनी अदर प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको पिकअप करो एज अ लीडर एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट. उसको उसका एंड प्रोडक्ट ये समझ के कि दैट विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल. So hope I'm okay with this answer. Yeah, If you are not satisfied, just let me know. Yeah, yeah. Manu Joshi has a Manu question. Joshi has a query that what will be the best resolution for next year for a BCA student? Dear, I'm not actually. I don't have a very good word on it properly. So maybe yeah, I'll not be able to answer that question. Maybe I have to jump on that. So sorry for that. Maybe I'll text you up later if you are available on some social media platform. So I really don't have an idea on that. What will be the best resolution for next year of BCA? So sorry for that. So maybe we'll take up the next question. Fair enough, Nakul. Manu Joshi, you can connect to Nakul on some social media platform as okay. Sure. You can get your query answered. Yeah. So next question says, Hi, you have recently started working in correct. an organization and how to learn from home. Any specific thing to learn? Correct. So Harshit, what I would recommend here is, अगर आप कॉलेज से स्टाफ्स की बात करोगे, आई बीन टू लॉट ऑफ कॉलेजेस, आई हैव सीन देयर इज अगेन अ लीडरशिप प्रॉब्लम विद ऑल द कॉलेजेस. वहाँ पे उनकी वैल्यूज होती हैं, उनका विजन होता है कि हमें टॉप लेवल कॉलेज बनना है, बट दे आर नॉट एक्चुअली doing things like that. I'm pretty sure about it. I've done a lot of analysis. But what would I recommend you right now is go to EDX, go to Coursera, go to IMPX. There are a lot of good portals which offer you a free education courses from top world class university. वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी जरूर रहेगी, यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड देन लर्न ऑल दिस स्टफ. दिस इज वन प्री रिक्वायरमेंट. यू शुड नो इंग्लिश, you should be well versed in English, and then you can go for that. So I would surely recommend you. I have learned a lot of things online. Even YouTube can help you a lot. I've been following a lot of great people like Vivek Bindra. Go and follow Vivek Bindra. Maybe you can learn a lot of leadership skills and business skills. So there are a lot of opportunity. You have to just find it out. So I would recommend you to follow online lectures. Yeah. Yeah. Pooja wants to know what are the future of nanotechnology in India. Oh, so what is my expectation is around by 2025 or 2030 the market will grow in India. Of course, the customer intake of the product is very big in India. So people are not ready to accept a new product which is with maybe with the hi-fi technology. If you could see a study about WhatsApp also, WhatsApp took a lot of time to reach a lot of people, correct? So obviously nanotech is far beyond that. And what I would recommend is the future can be seen well going and by the year of 2025 onwards 2030. So I'll go with that. Hope Pooja is okay on it. Yeah. Yeah. Tanvam Tanvam. wants to know who's your idol. My ideal, as I mentioned in the earlier beginning, I have been very closely following Dr. APJ Kalam sir and Vivek Bindra, and one more with Swami Vivekananda, and they are pretty good to learn a lot of things. I would surely recommend all the students to take out this video from YouTube of Swami Vivekananda and start understanding, why these leaders are actually the top leaders of the country. They have struggled a lot. There have been days I have seen in the video. There have been days with Swami Vivekananda that he has not even taken meals for two days, 3 days. So this is what a leader goes through, and then he comes out best for the people, correct? So you can start following this stuff. So this is my ideal as of now. And obviously parents, I've learned from parents also, I've learned neighbors. Yeah. I can just put up a very nice thing here. So you can actually take up a lot of people around you.
and start writing what good things they have, what bad things they have, and make another sheet of it and write all the positive things from there. So ये नए तरीका आपका complex ideal बन जाएगा, correct? So you should take all people around you, take the best qualities from them, start following that up. Okay, so just झूठ नहीं बोलना है ना. So there might be a parent of yours, maybe mother or father, who never says a lie. So take up that positive thing and start following that part. So आप अपने खुद के idols बना सकते हो, you need not follow any particular person because every person has a limit, correct? So I've been with a great mentor from last 2-3 years, but I found some small issue with him also. So probably आपको understanding होना चाहिए on a mature level कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, करेक्ट? तो इस चीज़ की आपको आइडियल कि जब आप वे के थ्रू जा रहे हो तो आपको ये हेल्प करेगा, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है मालूम बहुत ज़रूरी. ओके, सो उमेश सर कुछ कह रहे हैं यहाँ. Everyone is saying that you can start by solving a problem, but I think finding a problem is more difficult these days for students. बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी इस बारे में. मैंने उनको ये बोला कि आप अपनी लोकेलिटी में प्रॉब्लम देख के आओ. तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रहा है? लोगों का विजन क्लियर नहीं. लोग हमें प्रॉब्लम लोग कहाँ समझते हैं, करेक्ट? लोग प्रॉब्लम ये समझते हैं कि मेरे पे BMW नहीं है या मेरे पे बड़ा फ्लैट नहीं है, करेक्ट? फॉर देम द प्रॉब्लम इज दैट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम अ ग्रेट लीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ग्रेट लीडर क्या करता है? सबको इक्वली रखता है और वो देखता है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा मे बी अगर आप एक पुअर बंदे को देखो, करेक्ट, विंटर्स के डेज में ही डोंट हैव गुड क्वालिटी क्लोथ्स, करेक्ट, तो आपको वो प्रॉब्लम है सामने पर दिखेगा नहीं क्योंकि आपका वो लेवल ऑफ थिंकिंग है ही नहीं. बट लीडर जो होता है वो ऐसे लेवल पे जाके सोचता है कि उसके लिए सब इक्वल है. वो ये सोचेगा कि सबको खाना रात को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो हाउ कैन आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. So this is how you should start thinking on. So that's why I kept this session on leadership so that you guys can understand कि बॉस एक लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है. जैसे अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल इसी के ऊपर कोट करूंगा मैं. I've seen you can actually follow him also. I was telling about Mohammad Yusuf. So Mohammad Yusuf has done a very great, and he has got even a Nobel Peace Prize, correct? And he has got Nobel Prize because if you see all the banking system, they give loan to only rich people, and he's the only guy who has started a bank to give the loan to the poor people. So this is how the system works. Ab in Sir Navy, how this person has identified this problem is on a leadership point of view. तो अगर आपका व्यू लीडरशिप वाला है, यू हैव द लीडरशिप अंडरस्टैंडिंग कि बॉस मेरे को सबको इक्वली कैसे देखना है, देन आई कैन आइडेंटिफाई मोर प्रॉब्लम्स. So this could be the key for my your question. Yeah, Mesh. Yeah, Manas Tiwari has a question. Yeah. He asked how to define balance between Okay. personal and professional. Cool. So this I have learned recently from another very great personality whom I'm working with SRM, in SRM. So he's a very aged person, but then what I've learned from him is he never, whenever he comes to office, correct, he will only think about what is going in the office. Maybe his family is not doing great at home, they are sick, whatever XYZ, correct? He will never ever let that thing influence his personal or professional life, correct? तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप घर से ऑफिस पे जाते हो तो ऑफिस शुड बी योर ओनली थिंग, और जब आप ऑफिस से घर आते हो तो होम शुड बी योर ओनली थिंग, करेक्ट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो आपको अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज अलग अलग रखनी पड़ती है. And this could be the one good thing I can recommend you. Okay, how to know that? Okay, so it just is how I can adopt it or not. The market will adopt the product or not. So obviously things are very risky. So if you have heard about again a Vivek Bindra session on why Swami, this are a very Ayurvedic startup, is doing great. So the CEO of that startup, Baba Ramdev startup, is so he does all the research before making any decision. So इसका purpose ये है कहने का, if I'm doing mentoring, I should not go directly to start doing mentoring right now, correct? I should go and talk to 100 people, 50 people or 200 people कि boss आपको mentoring की जरूरत है या नहीं. I should cross question them, understand their views, and then jump into that product, whatever I want to offer. So market survey is very important for all these kind of startup level thing if you are trying to, correct? Thus the decision making sequence changes over different goals. It should never change as per my understanding till now. After following a lot of leaders, I'm giving you that input. If you see Ratan Tata also, if you see Ambani
Amani again has that same vision, मेरे को country के लिए कुछ करना है, correct? I want to give Jio to the country so that people can get internet services everywhere and they can start communicating with each other, correct? So this is how it works. आपकी जो मैंने that's the reason I just take back to you that again slide, so maybe you should start following that again and see that if you can do some case studies tonight and understand does it work for you or not. Correct. So I'm saying again here, you should apply this order for all these big personality or any other good, great leaders if you can see, correct? So they all majorly follow this pattern of, making decision. Country should be their proper priority of world level, on a humanity level, the society and family and person, correct? So this is one slide which can give you a lot of insights on how top leaders make decisions. And I would highly recommend you to follow this if you are aiming to become a great leader. और आज के सेक्शन की what I am expecting a success today is if one of you become a great leader from this session, I'll be pretty happy about it, correct? So मेरा कहना ये होगा decision making के time भी you should keep all this priority in the same order if you're aiming to become a top leader, correct? So this is how it goes. Does being a leader affects our output? Leader is a very novel thing. Leadership is a very novel thing. It is very harsh. You can have a very harsh life also, but the fruits are very good. So I have understood it many times actually. So I could give you a small inputs. कभी office पे team meeting होता है, and you might be short with the budgets. You might not have very good revenues in your pocket, but still you want to celebrate with your team, correct? So you get all the stuff, you get all celebration stuff and sit with them, have some jolly time, correct? So this is how it should be. So leadership का point of view यही है कि आप सबके लिए करो to the best of the best level without considering your personal and family or professional level. अगर आपको जो भी उस टाइम है for anyone, तो leadership can play for anyone anytime, correct? So hope I'm okay answered your question query on that. So another question comes here is how to start conversation to a role model or a person who wants to work expert, you can say, correct? Okay. So one thing is again very okay, if you want to go with a role model, correct? So आपको पहले तो role model को approach करना आना चाहिए and you should do a full study about them, what they like, what they don't like, what's the current thing they are working on. So if I take the perspective on the terms of a researcher, अगर कोई बंदा research करना चाहता है अपने role model के साथ जाके करे, you should study about what research that person has done, what is the problem he's facing right now, correct? I'm telling you again, a golden rule. Maybe I'll share you with you on my Facebook page if you come, if you can join me by name of Nakul Mehrotra. I'll share it tonight itself. That problem, that's the basic rule on how to catch even a job, correct? If you're looking for a job, you should identify a problem in the sector. So I usually do that, correct? So आप एक problem को identify करो and you make sure that you are a solution to that. तो अगर अपने expert के साथ भी work करना चाहते हो, you should understand what problem that expert is facing and how you can be the one person who can solve that problem. अगर आप इतना understanding ला सकते हो, maybe within a short period of time, then you can surely make and work with them. Obviously एक और चीज होगी, when you are asking that for first time conversation, how to start the conversation. Obviously it should be a very genuine conversation. तो अगर आप एलिवेटर स्पीच सुनोगे जब बच्चे स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहला बेसिक रूल वो ये चेक करते हैं व्हेन अ पर्सन इज कमिंग फॉर आस्किंग मनी, ठीक है? तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो मनी देते हैं बंदों को स्टार्टअप चलाने के लिए. तो व्हेनेवर एन स्टार्टअप गाय इज कमिंग टू एन इन्वेस्टर, he has that basic protocol of greeting a person first on a priority level and how we can grow that the system with the money, correct? So ये चीजें बहुत बेसिक आपको अंडरस्टैंड लेके जानी. तो आप कभी भी किसी से मिलो पहले जाके ग्रीटिंग जरूर देना है. देन यू शुड जंप इनटू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट. सो इसके अगेन 3 मेथड्स होते हैं, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, करेक्ट? सो यू कैन फॉलो दीस 3 C's while you are talking to anyone. Which says connect, मैं जाके पहले लोगों को connect करूँ. This is what you do when you do an interview introduction, correct? So you communicate with the other person stating that I belong to Uttar Pradesh. So what is Uttar Pradesh basically is a tag where if an interview is from Uttar Pradesh, he can connect with you, correct? So that's what the tag we use. So आप उनको connect करने की बहुत कोशिश करो, connect and then communicate your idea while you are coming to them. What solution you can offer to them and what you can get from them, maybe a knowledge or experience letter or revenue, whatever. And third option is convey. So connect,
convey, and convince. Correct. Third one is convince. Correct. So you should do that way. So I guess there's a last question on how to make good mentors, because change is the next generation. We need to be good mentors. Correct. So obviously, I've seen a lot of people. I'm also facing that challenge right now on how to train good number of mentors, because it's really very very challenging. You can give a lot of skills to a person, but he or she might not be able to cope up with that skills or set of values. So I've seen certain bad examples also in my life. I've trained few couple of people, very close people. I've helped them, I've supported them a lot, but then they went on to making money in some direction, wrong directions. So obviously you don't have a hold on that. But what you can do is you can start passing the core values or the ethics you have to certain number of people, and they can, if they are pretty good and true to you, you can start following that up. So hope I'm done with all the questions. Anything else Yeah, left, Nakul. Rashmi? Yeah, there's one question from the going around people, that what are your next year plans, like goals? Correct. So as I mentioned, that slide belongs to me only. So I have kept a plan of adopting a village in next certain 1 year time, 2019, and then I'm looking forward to develop some good number of jobs, because I could see there's a lot of employment problem in the system, and then I will be jumping towards nanotechnology industry. So this is how I've kept my vision planning. And as I recommend to everyone, you should keep it on your diaries with the year wise and a very realistic way. Right. Yeah, thank you, Nakul. uh, I would say commendable. आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी, हमारे व्यूअर्स को भी, and everyone here has got something or something to learn from you, Correct. and it was really motivating. And thank you once again, Yeah. and we wish you all the best for all your initiatives and your future perspectives and Yeah. all your 10 years or 20 years plan. Yeah. You're doing it really well, and we actually thank you a lot for coming on the show with us. Yeah. Okay. And Yep. Yep. so Listen. yeah, Yeah. and here I would like to hand it over to you to Yeah. Sure. say Thank you. something to the viewers if you want to at last. Yeah, thank you so much for coordinating this session. Nice session. I really enjoyed it. Maybe I would do. This was my first session on a live video. I would do probably more session and encourage more people to join it and learn from it. And I would recommend all the people to recommend negative feedbacks about the session, so that we can learn from it and start developing in a better way. Before moving further, I would like to say a word of thanks to Mr. Umesh, who recommended me to join us for this session. He's really a great guy, and I could see a great future with you and Manthan. You guys are doing great job. Even your team is doing a great job, and I'm always available for any kind of clarification or support or help. And I really love talking to a lot of students here. So I would be happy to have any other sessions. Yeah, Yeah, happy to see. Nakul, sorry to interrupt you in between. We actually have one more question with us, which is Yeah, from Pooja Mehta. yeah. She asked, what kept you motivating and keeping you motivated when you started? How did you choose your team members? Okay, so there are good people, there are bad people, correct? And obviously, it's very very time taking to understand people. But what I've learned in recent days is spending a quality time with people will make you understand how they will help you out. Correct? That's the first thing. So you should have a quality time with your new selectors. Probably if you're taking interns or whatever XYZ. Correct? So have some quality time with them, and then start sharing your values. Values in the sense कि मेरे business में what is more important? The impact is more important or money is more important? You should be able to communicate that and then understand how well they are taking that input from you. I've seen, I have some great leaders with me right now, and that's the reason, I'm doing pretty well. So I do, I guess, 10% of the work. There are a lot of people with me who do most of the work. So they are all top great leaders with me, correct? So what they do is they make sure that what values I have for my system, they make it going in a passing way with the other team members. So this is how it should be. So whenever you're selecting a team members, you should have a quality time with them and share your values. Values in the sense you should be following their values, and you should be a true inspiration. If you're a leader on the top, should be an inspiration to them also. Like when I say punctuality and it's 8 o'clock, I should be there at 8 o'clock. Correct? It should not be like you are the leader and you're going at 8:10. Correct? So this is 2 3 obvious things you should follow.
when you're selecting people. Correct. This is what I have learned till now. Yeah, Yeah. yeah. Pooja Mehta is saying ki, our question is how to present her idea to people in the way they can understand. Hmm. Can you come up with a question again? Yeah. She says ki, how to present my idea to people in way they can understand. Okay, how to present my idea, correct? So if it's related to startup thing, again, probably we can work on more clarification on how to pitch up their ideas and all. But what again I'll say is the three C's: connect, communicate, and convince. This is the three basic C's which everyone used there, correct? So अगर आप अपने आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या उनसे पहले कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, when you're talking to a person, he'll not be able to listen to you, correct? He'll not be happy to listen to you, correct? So आप पहले हमेशा कनेक्ट करो लोगों को आपस में. So when you're talking to a person, you should always connect with them, correct? And then start convincing your ideas. Communicate with them कि मेरा idea है क्या. So why this idea can be a solution to a world level problem or a country level problem. So आपको इस level पे जाके बात करना है. I'm talking about in startup level, correct? If it's Okay. something else, then we can talk about it. Yeah. Yeah, I guess we are done with the questions that Pooja Mehta has asked. Uh, yeah. Come up again. Yeah, yeah. What do you We are mention? done with the questions. Done with the session as well. Yeah. And once again, we are very grateful. Thank you for being active and also Thank you being so much. Thank you so much, Priya, and all the members who have participated in that. And again, another input I want to give is you guys are doing great job. Please do let me know if you find anything uninteresting or can be improved so that we can work on it and we can give a thumbs up on it and we can go in impacting more people around the world. So thank you so much for having me on the session. Have a great day. Keep rocking. Stay awesome. Stay happy. Bye okay. bye. You too. So thank you, Nakul. So we'll wind And up now. Yeah. yeah, here we wind up our session for today. And we'll keep you updated about our next session Yeah. and आपसे post करते रहें and हमें भी आप बताते रहें the ways in which we can work with other people who will like what we do in our next session and what are the various topics you would like to discuss upon. So keep telling us, keep viewing us, and keep being motivated. All the best, All the everyone. best. Take care.